Hello everyone. So today we are going to read and I'm going to tell you about the uncontrolled re-entries of satellites, which is causing a lot of damage to the global commons, which is outer space. And because of these satellites, they are entering our the atmosphere without any kind of control measures taken. तो इसमें सबसे बड़ा ऑफेंडर अगर कोई है ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड इज चाइना. अभी रिसेंट ईयर्स में चाइना हैज बीन डिस्ट्रॉइंग आवर इकोसिस्टम लाइक एटमॉस्फेरिक इकोसिस्टम लाइक एनीथिंग. उससे पहले अगर हम पूरी हिस्ट्री की बात करें तो अमेरिका हैज बीन द बिगेस्ट ऑफेंडर ऑफ दिस, राइट. तो दीज सैटेलाइट्स लाइक दिस आर कमिंग डाउन आफ्टर बिकमिंग स्टैग्नेंट. इनका जो यूज था ये यूजलेस हो गए, स्टैग्नेंट हो गए. उसके बाद इनकी री एंट्री होती है, दे बिकम डेड. तो इनकी री एंट्री होती है तो मोस्टली दे आर प्रोजेक्टेड टू दिस ओशनिक सरफेस. बट अगर इनको अनकंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है तो समटाइम्स दे फॉल ऑन द लैंड सरफेस एज वेल. लाइक इसरो ने रीसैट-2 का भी री एंट्री कराया इन 2018 एंड इट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इन द इंडियन ओशन और बहुत ही इजीली इसरो ने इसको मैन्यूवर किया, राइट. देन कम्स व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट इज Outer Space Institute. It is calling for both national and multilateral efforts to restrict uncontrolled re-entries. Why is it so concerning? It is a concerning subject. It is a concerning subject because these re-entries, they cause a lot of damage to the atmosphere और इनसे contamination भी होता है atmosphere का. Because if they burn and some parts they are not like they don't burn, तो वहाँ पर कंटैमिनेशन होता है. एंड व्हेन दे फॉल ऑन द अर्थ, इफ दे फॉल ऑन द लैंड सरफेस वेयर देयर इज ह्यूमन हैबिटेशन, वेयर देयर इज सम पॉपुलेशन लिविंग, तो क्या होगा, वो अगर 300 ग्राम से ज़्यादा का ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कर सकता है. दिस हैज़ बीन शोन इन स्टडीज एज वेल. सो द फिनोमिनन ऑफ रॉकेट पार्ट्स फॉलिंग बैक टू द अर्थ in unguided fashion once their missions are complete, right. The Soviet Union launched its first artificial satellite in 1957. Today there are more than 6,000 satellites in the orbit. So satellites, I think आप जानते ही होंगे. Around the Earth there are satellites, like Earth is orbiting around the Sun, and these satellites, the natural satellite is Moon. Like Saturn has a lot of satellites, natural satellites. Then Jupiter has a lot of satellites, but Earth has only one natural satellite, which is our Moon. And then we launched some artificial satellites also for the navigation purposes, for the like telecommunication purposes, for there are many purposes for that. तो इसीलिए हम artificial satellites को launch करते हैं. Most of them are in low Earth orbit and geostationary orbits. Geostationary orbits में most of the satellites placed are telecommunication satellites, जिससे कि अगर उनका जो network issues या problem ना हो, right. And then low Earth orbit में most of the satellites are navigation satellites like GPS. ठीक है, GPS is also in geostationary. The number of rocket launches have been surging with the advent of reusable rocket stages. There are reusable rocket stages जैसे कि SpaceX Falcon का आपने देखा. India is also experimenting on that. India is on technology demonstration stage. अभी India advanced stage पे नहीं गया है. तो India ने RLV-TD, it was called RLV-TD. It was named RLV-TD, Reusable Launch Vehicle Technology Demonstration. RLV-TD स्टेज अभी इंडिया डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज में है, बट इंडिया विल एडवांस. इसरो इस पर लगातार काम कर रहा है. बिकॉज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का फायदा ये है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को अगर हम लगातार यूज करेंगे तो हमारा जो खर्च है, ओवरऑल कॉस्ट इनपुट है, वो कम हो जाता है स्पेस मिशंस में. और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट वी आर कमिंग अप विद अ न्यू कोर्स जिसमें कि आपका पूरा का पूरा GS फाउंडेशन प्लस एडवांस का कोर्स है. इट इज ओनली फॉर 21,499 रुपीज प्लस GST. यू कैन पे दिस मीनियल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट है. यू कैन पे दिस इवन in 11 EMIs, which will cost you around like 2,000 or 2,500 per month. So this is nothing. And यहाँ पर पूरे comprehensively GS and advanced का preparation, GS का foundation and advanced level का preparation आपको कराया जाएगा. There will be daily answer writing. There will be one-to-one sessions with the teachers. I will also take some sessions.
तो ये सारी चीजें हैं. लेट्स कैरी फॉरवर्ड विद द रॉकेट launch thing. So there are 3 or 4 stages. Some rockets are with 3 stages. There are some rockets which are with 4 stages, and the most common was, before GSLV for India, the most common was the 2-stage launch. So as you can see here, there is a solid fuel like coal को इसमें भरा जाता है. This is a core stage, और यहाँ पर there are strap-on motors. ये इसको provide करते हैं thrust. Then there is a liquid stage, and then there is a header. So this header is with the satellite. ठीक है, और ये satellite जो होता है इसको भी छोड़ देता है लास्ट में, और उसके बाद it floats in the orbit. When it floats in the orbit, and जब तक इसका time period है, like it was for 5 years, 3 years, जब तक इसका time period है, it rotates in the orbit, and उसके बाद ये अर्थ पर because of the gravitational force fall करता है. जब ये atmosphere में आता है, so those satellites which are small in size, they burn completely, and they don't cause damage to the earth, they don't cause damage to the population, but they cause damage to the atmosphere through contamination, right? अगर उनका कुछ ना कुछ debris बच गया, so that debris, अब अगर अर्थ का स्पीड आप देखें, it's around 1600 किलोमीटर पर आवर, उसके बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका स्पीड उससे भी ज्यादा है, तो उससे ज्यादा स्पीड में वो घूम रहे हैं. अगर 1600 पर आवर, इट्स मोर देन अ बुलेट. 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपको कुछ ग्राम्स का भी ऑब्जेक्ट लग जाए, तो इट विल कॉज डैमेज, इट विल कॉज अ होल टू योर बॉडी और दिस वॉल एज वेल. सो इसलिए स्पेस डेब्री इसलिए खतरनाक है, और देयर हैव बीन डिस्कशंस ऑन दिस, बट अभी तक कोई भी ऐसा ट्रीटी या कन्वेंशन या प्रोटोकॉल हमारे सामने नहीं आया. दीज आर सम स्टेजेस. देन लेट्स कम टू द other carry the payload to the orbit, then perform a de-orbit maneuvering. पहले ऑर्बिट तक ले जाया जाता है, और फिर ऑर्बिट में जाकर के इंजन्स आर स्विच्ड ऑफ, तब वो ऑर्बिट में ही मैन्यूवरिंग होती है, तब ऑर्बिट में ही रोटेट करता है सैटेलाइट. अगेन, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए यू नीड मैन्यूवरिंग. उसके लिए देन अगेन यू स्विच ऑन द इंजन, एंड ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जाते हैं. इन बोथ केसेस रॉकेट स्टेजेस कम डाउन. रॉकेट्स, ऑल द रॉकेट, मैंने जो स्टेजेस आपको दिखाए थे यहां पर, ऑल ऑफ दीज स्टेजेस कम डाउन एंड द सैटेलाइट रिमेन्स. इन बोथ केसेस रॉकेट स्टेजेस कम डाउन इन कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड वेज. तो ये स्पेस डेब्री क्रिएट करता है. इन एन अनकंट्रोल्ड री एंट्री, द रॉकेट स्टेज सिंपली फॉल्स. इट्स पाथ डाउन इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेप, एंगल ऑफ डिसेंट, एयर currents and other characteristics. It will also disintegrate when it falls. As the smaller pieces fan out, the potential radius of impact will increase on the ground. ठीक है, some of the pieces will burn up entirely, and some of the pieces will not. And those which will not, they will cause damage to the atmosphere by being space debris or through contamination. Then there is an International Space Safety Foundation report 2021, according to which impact anywhere on an airliner with debris of mass above 300 grams, आप देख रहे हैं 300 ग्राम से ज्यादा का अगर डेब्री है, it would produce a catastrophic failure, meaning all people on board would be killed. Space debris, and there comes a rocket, अगर वो आकर के लड़ता है तो क्या होगा? It will cause a damage, catastrophic damage. Most of the rocket parts have landed in oceans, principally because on the earth the land surface is very much less than the oceanic surface. तो majority में क्या है, prominence में क्या है, oceanic surface है. The potential impacts then, Russian rocket in 2018 and China's Long March 5B in 2020 and 2022 striking parts of Indonesia, Peru and Ivory Coast among others, and India was also involved. Many news reports have focused on Chinese transgressions, but historically the US has been the worst offender, because न्यूज़ चैनल्स मोस्टली कहाँ के हैं, वेस्टर्न वर्ड्स के हैं, BBC, CNN, IBN, जो वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, तो वो चाइना को थ्रेट की तरीके पोस्ट करते हैं, बट US हैज बीन द वर्स्ट ऑफेंडर फॉर दिस मैटर. सो फॉर मिनिमाइजिंग द डैमेज वी हैव द OSI recommends that bodies aim for ocean in order to avoid human casualties, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ओशन में जाएं, इसलिए ह्यूमन कैजुअलिटीज को अवॉइड करने के लिए हम काम करेंगे. इट शुड बी एक्सटेंडेड टू री एंटरिंग सैटेलाइट्स एज वेल.
Advances in electronic and fabrication have made way for smaller satellites. Like हम अब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जिसमें कि माइक्रो सैटेलाइट्स हम बना रहे हैं, नैनो सैटेलाइट्स बना रहे हैं. नैनो सैटेलाइट्स once they are like stagnant, they are of no use, they will come to the atmosphere, they will fall to the atmosphere and they will burn. They will not cause any kind of debris. These satellites experience more atmospheric drag if they had been bigger, but they are also likelier to burn up during re-entry. Then there are data, आपको इसका PDF मिल जाएगा, PPT मिल जाएगा. Then what can make minimum damage? There is no international binding agreement. So there is no agreement at all, but there is a convention, the liability convention, requires country to pay for the damages, not prevent them, because the space, outer space comes under global commons, and global commons is for all. You have no right to cause damage to the global commons, like oceans, like the earth's natural resources, and then outer space. These technologies include wing-like attachment, deorbiting brakes, and extra fuel on the re-entering body. India, with its 300 kg resat, it was like I think in navigation satellite or something like that, या फिर ये telecommunication से related था, re-entered Earth's atmosphere in October after 13 years in low Earth orbit. The ISRO tracked it with its system and उसका successfully हमने Indian Ocean पर वो fall हुआ. So this was it for today. Thank you so much.